वरुण रेड्डी, इनके द्वारा सर की अगवानी की गई, इनका स्वागत किया गया। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान GSN रेड्डी लगभग अपने स्थान के पास पधार चुके हैं। प्राचार्य महोदय भी साथ साथ हैं। भारत स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा स्थान के पास हमारे मुख्य अतिथि को लाया जा रहा है। All the parents of KV Gachibowli, all the staff members of KV Gachibowli, and my dear children. In fact, I am very happy to be as part of this annual day celebrations of Kendriya Vidyalaya Gachibowli. The moment Mr. Raju requested me, I have readily accepted the invitation just because I am having a lot of affection on this school. The reason being, this is my school for all purposes, and moreover, the staff and children and principal are
very dedicated and they are working very hard and producing excellent results. We have seen, all of you must have heard, gone through the annual report presented by the principal. That itself shows that for the last 7 years, this school is producing 100% result. I can proudly say that there is no other school in the country, not only in Hyderabad region, there is no other school in the country producing class 10th and 12th 100% result for the last 7 years. So give them big hand. This is simply marvelous. Behind this, the hard working of the children, the motivation of the parents especially, because when the parents motivates the children, encourage the children that they should go in the right direction, properly in the school, and the hard work of the teachers, dedication of the teachers, and meticulous planning of the principal, all these factors have come a long way, has gone a long way to produce such an excellent result. So I congratulate all the children who are producing excellent result of the school, we have done very well in the board examinations as well as in the internal examinations. I also congratulate the principal and the staff of KV Gachibowli for doing wonderful work. I request them to continue it in future also. Annual Day is one of the important programs of the Kendriya Vidyalayas, wherein the children, after working for the long academic year, get the opportunity of presenting the beautiful cultural programs. All the parents are eagerly waiting to watch their children on the stage for the excellent program on the occasion of the annual day. So I request the staff and the principal of KV Gachibowli to continue their dedicated work in further the quality and quantity of result which produced by the Kendriya Vidyalaya Gachibowli should continue it. So I bless them and I wish them that they will achieve these goals continuously forever. I also request all the parents to support their children, and they should not pamper the children, and the children should understand the facts in the life as well as in the academics and other activities. For this, the great support of the parents is required very much, and children definitely will flourish in their endeavors. So I, on behalf of the regional office and on my own behalf, I wish the principal, staff and the children of KV Gachibowli very best of luck. Thank you. God bless you.
చాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ చిక్కి చకచో గిలిగిలి మన్ సులుసులు మన్ మకరక బుకుబుకురి టుకుబుకురి చకలక మిక్కో చిక్కో సిరి సిరి సిరిగో బగదుం తగదుం చికి చకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ वक्त जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गामा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुद के सजे आओ वक्त जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले और रख के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है तो मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ वक्त जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बोले मस्ती में डोले बोले मस्ती में तू डोले बोले मस्ती में डोले बोले मस्ती में तू डोले बोले मस्ती में डोले बोले मस्ती में तू डोले बोले
For him, why don't we buy some fresh fruits? Fruits are very boring. I will buy any chips only. I love to eat chips, Aman. Come on, let's go and buy chips. Very boring. Now I play some games. So boring. I'll on the TV now. I'm feeling hungry. Now I'll see what has mommy kept. Wow, noodles! I will eat them. సౌండ్ పెంచాలి Aman? 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 What, Dad? What are you doing, Aman? Oh, eating noodles and watching TV. Oh, many times to tell you. Don't watch TV while eating. Stop watching TV. Please, for little time. Okay, just for half an hour. I will take rest. Thank you, Dad. Dad! Dad! What happened, Aman? My stomach is paining. You should not eat continuously. I think I'm feeling hungry. Hungry? Just now you had noodles. But there is still place in my stomach. No, no more food. Aman! 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 Come and play! Come and play! Aman, go out and play with your friends. No, I am very tired. Okay, bye. Okay, Aman, take some rest. Aman goes to sleep and starts dreaming. In his dreams, he sees all his organs having a meeting. This boy, Aman, he simply keeps on eating and eating all the time. But it's me who has to work hard to digest everything to keep him fit and fun. You know, I am the most important organ of the body. If I stop working, then the person will be hospitalized. My dear friend, you do a work of digesting the food, but we, the small and big intestines, play an important role in fighting with the germs and regulating body water level. If we stop working, then the person will have stomachache and diarrhea too. So we, the intestines, are the most important organ. Mr. Intestine, you do your job, but what about the body waste? We, the bag of kidneys, work like a waste disposal system. We clean the blood and discharge the waste produced by the body. So, feet are the most important organ in the body. Mr. Kidney, will you please stop praising yourself? Eat bones and muscles, which helps the body move. If the body
You have nothing to do. Just You may say so, but if I stop working as you all say, dhak 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 dhak, then the person dies. I purify the blood and send it to different parts of the body. Without my function, it's the end of you all. So I am the most vital organ of the human body. Listen to me. I do the hardest work of all. With the digestive juices I have, I burn the fats to give you all energy to do your functions. If I don't burn fat, you all fail in your functions. So I am the most important organ in the body. Stop boasting about yourselves. No matter what you eat and how much you eat, you cannot survive if I stop working. That's the end of you all. Me, who takes in oxygen and sends out carbon dioxide. I am the most important organ in the body. My dear friends, will you listen to me please? All of us are equally important for the body. Just imagine if one wheel of a car is punctured, would it run as smoothly as it used to? No, it is very difficult to move ahead. Similarly, all of us are equally important for the body. If one stops working, either you or any other organ of the body, the others would find it difficult to perform their duties. So it is Aman who has to start having healthy eating habits and has to exercise to stay fit. Only then all of us will be able to perform our duties. It's a team to work together to keep Aman fit. Yes! Wake up, Aman! Wake up! Be active! Eat healthy food! Watch TV for a short while! Play and be active! Drink fruit juices and say no to artificial things! Aman!
కలిసి మెలిసి పదికే చక్కని చిక్కని అడవి తల్లి అడుగుల్లో చక్కని చిక్కని అడవి తల్లి అడుగుల్లో కోయిలారే 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 ఆకాశం నీడనిచ్చే భూదేవి బతుకిచ్చే గోదారమ్మ వన్నెల్లు చెట్టు పుట్ట కన్నుల్లో పాదల బండి లేదయ్యో నికార్సైన బతుకయ్యో పాదల బండి లేదయ్యో నికార్సైన బతుకయ్యో అన్నం పెట్టే కొండ తల్లి కొలువుల్లో అన్నం పెట్టే కొండ తల్లి కొలువుల్లో కోయిలారే 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 కుహు 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 కోయిలారే 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 కొమ్మను చూడు పావులార జంటను చూడు అన్నం పుణ్యం ఎరగని మన్యం కుండల్లో కోయిలారే కొమ్మను చూడు పావులార జంటను చూడు అన్నం పుణ్యం ఎరగని మన్యం కుండల్లో కోయిలారే 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 హరి आर्चर प्रोडक्ट फाइनल सेंटर Brahma
ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ चित्रगुप्त? महाराज, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत उसे लेकर यमलोक के लिए रवाना भी हुआ, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। और वह यमदूत कहाँ है? वह भी लापता है। प्रणाम महाराज। अरे तू कहाँ मरा था इतने दिन? गया निगाह में कैसे बताऊं, आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया, परंतु भोला राम का जीव में चकमा देकर गायब हो गया। मैंने उसे पूरे ब्रह्मांड में खोजा पर उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, रास्ते में कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? लगता है तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है। तुम सटिया गए हो। भला उस साधारण गरीब कर्मचारी का कोई अपहरण क्यों करेगा? नारायण नारायण, क्या हुआ महाराज, आप सभी दुखी दिख रहे हैं। हाँ नारद, एक बड़ी उलझन में फंस गए हैं। भोला राम नाम के आदमी की 4 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को लेकर यह ढूंढ यहाँ आ रहा था कि रास्ते में जीव ने इसे चकमा देकर भाग गया और इसने उसे पूरे ब्रह्मांड में खोजा, परंतु वह कहीं नहीं मिला। कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन्हीं लोगों ने रोक लिया हो। इनकम होती तो टैक्स लगता, बेचारा छोटा कर्मचारी था। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ। वैसे भी मुझे इस गिटार का तार खरीदने पृथ्वी पर जाना ही है, तो उसे भी लेता आऊंगा। कहता हूँ, भोला राम नाम था उसका। वह हैदराबाद के कुंदागुड़ा इलाके में परिवार सहित रहता था। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 7 साल थी। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं भरा था और इसी कारण मकान मालिक उसे मकान से निकाल देना चाहते थे और इतने में ही उसने संसार छोड़ दिया और आज 5वां दिन है। अच्छा अच्छा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। नारायण 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 नारायण। आगे जाओ महाराज। मूर्ख लड़की, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। क्या यही भोला राम का घर है? हाँ हाँ, यही भोला राम का घर है। तो जाओ और जाकर अपनी अम्मा को बुलाओ। उनसे यह कहना कि मुझे भोला राम के बारे में कोई जरूरी जानकारी चाहिए। जाओ। अम्मा। प्रणाम महाराज। माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताओ महाराज, गरीबी की बीमारी थी उन्हें। 5 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन आज तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई। हर दिन ऑफिस के चक्कर काट के वो परेशान हो गए और इसी दुख में इनकी मृत्यु हो गई। क्या करोगी माता, उनकी उम्र ही उतनी रही होगी। माता, मुझे यह तो बताओ, क्या उनका यह किसी से विशेष लगाव था? लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं नहीं माता, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री से। बकवास मत करो महाराज, तुम साधु हो या लुच्चे लफंगे? हाँ माता, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। सच्चे परिवार का तो यही आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। ना रुकिए महाराज, कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उनकी रुपये पेंशन शुरू हो जाए? साधुओं की बात कौन मानता है? फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और भोला राम की पेंशन के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद महाराज। नारायण नारायण। चाहिए। मैं भोला राम की पेंशन के बारे में जानने आया हूँ। भोला राम की पेंशन का आवेदन तो दिया, लेकिन उस पर वजन नहीं रखा है। नहीं उड़ गया होगा कागज? क्या इतने सारे पेपर वेट पड़े हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? आप ऐसा कीजिए, इनके पास जाइए। मैं भोला राम की पेंशन के बारे में जानने आया हूँ। अजब साधु है, आपको सरकारी कामकाज के रिवाज समझ नहीं आएंगे। आप ऐसा कीजिए, बड़े साहब के पास जाइए।
नारायण नारायण। इसे क्या मंदिर वंदिर समझ रखा है? ऐसे धड़धड़ा के चले आ गए। पहले बाहर चपरासी से पूछना चाहिए था। कैसे पूछता, आपका चपरासी तो सो रहा है। ठीक है, बोलो क्या काम है तुम्हें? मैं भोलाराम की पेंशन के केस के बारे में जानने आया हूँ। आप है साधु, आपको ऑफिस के रीति रिवाज का पता नहीं होगा। भोलाराम ने एक गलती की थी भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी आपको दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम की पेंशन के फाइल के कागजों के ऊपर जरा वजन रख दीजिए। यहाँ भी वही वजन वाली समस्या खड़ी हो गई। आप चाहे तो यह वीणा भी इन कागजों के ऊपर रख सकते हैं। वीणा? नहीं नहीं, अच्छा ले लीजिए, परंतु बेचारे की पेंशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, होगी यह वीणा 4-5 हजार की, मेरी बेटी को काम आ जाएगी। ठीक है, साई प्रसाद जरा भोलाराम की पेंशन की फाइल ले आना। क्या नाम बताया आपने? लगता है ये ऊंचा सुनते हैं, भोलाराम। कौन पुकार रहा है मुझे? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? भोलाराम, तुम भोलाराम के जीव हो? हाँ। तुम इतने दिन पेंशन के फाइल में अटके थे, तुम्हें तो पूरे ब्रह्मांड में खोजा जा रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं तो यहाँ अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ हूँ। मेरा मन यही लग गया है। मैं अपनी पेंशन की फाइल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। हमारे देश में ऐसे कितने भोलाराम हैं जिनकी आत्मा आज भी उनकी पेंशन फाइल में अटकी हुई है। उनका परिवार भूखा मर रहा है। तस्य समीपं गच्छामि। हे पुत्री, तव हस्ते पुष्पं, बिल्वपत्रं, दीपं, धूपं, गन्धं किञ्चिदपि नास्ति। त्वमेव कथयसि यत् बोधिसत्त्वः तु अहिंसां परमं धर्मं मन्यते। हे पुत्री, त्वं तत्र गत्वा कथं पूजनं करिष्यसि? हे माता, त्वं मया सह गन्तव्यं। पश्य यत् अहं पुष्पं, फलं, पत्रं, धूपं, दीपं, गन्धं विना केन प्रकारेण पूजनं करोमि? आम्, आवां गच्छावः। प्रकारेण हिंसां न स्वीकरोति तदा अहं वृक्षेभ्यः पत्राणि, फलानि, पुष्पाणि त्रोटयित्वा कथं हिंसां करिष्यामि? यतः वृक्षस्य पत्रमपि त्रोटनं हिंसां भवति। वृक्षो रक्षति रक्षितः अस्ति खलु। अतः नैवेद्यं विना मम इयं पूजां स्वीकरोतु। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पुत्री त्वं धन्योऽसि त्वं मम पुत्री असि त्वं मम पुत्री भूत्वा अपि मां शिक्षयति यत् कथं पूजासामग्रीं विना सत्यमनसा भक्तिभावेन ईश्वरस्य पूजनं भवितुम् अर्हति। एवमस्तु एवमस्तु। ॐ वायो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो रे। मजा ही आने वाला है। धन्यवाद।
हमारे यहाँ कोई मारेगा, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे कैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जानिया हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार वाले हम जालसाज, हम इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूटते दिल के तार से दिया वाले, छूटते तार से दिया वाले, खुशी के छक्के छुड़ा दे हम दिया वाले, खुशी के छक्के छुड़ा दे हम दिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले मेरे ताले। जाने दे सजा दे दे जिसकी यारों के दिल में हो तो यार हमें पुकार तो जान सारे टकराए, कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूटते दिल के तार से दिया वाले, छुपले हार से दिया वाले, छुपते छुपते छुड़ा दे। तो क्या रंगीन परफॉर्मेंस थी, मानव विद्यालय का प्रांगण गूंज उठा हो। And the parents and my dear children, today is really a very good day in the history of Kendriya Vidyalaya Gachibowli. Wonderful and colorful cultural programs presented by all the children are very outstanding. Like the school is performing outstanding in academics. They have performed very well, like professionals. All the children performed very well. I congratulate all the children who have participated in various activities and presented a beautiful cultural programs today. Behind this, all the staff members must be working very hard for the last maybe 15-20 days, and with dedication, see how professionally they have molded the children to present such a beautiful cultural programs. So I congratulate all the staff members from the core of my heart, and keep it up in the future, and God bless you. Congratulations. I request Saab to give one special announcement. Yeah, being a beautiful cultural program day today, annual day, tomorrow will be a holiday for all the children and the staff. Thank you, sir. May I request Sanu Rajapan madam to propose vote of thanks. Respected Honorable Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Hyderabad Region, Shri G.S.N. Reddy Sir, Principal Sir of the venue school, Shri P.S. Raju, Headmistress Ma'am, distinguished guests, parents, teachers, staff of the Vidyalaya, and dear students, good evening. Life is not about receiving all the times. It is a combination of being thankful for what we have as blessings and sharing those blessings with others. Truly, it is an overwhelming for the Kendriya Vidyalaya Gachibowli family as we share our achievements with all of you in this 26th annual day celebration. On behalf of this family, I extend my sincere gratitude to those who have contributed in the success of this day. Many beautiful things cannot be seen or touched. They are felt within the heart. And what our beloved and dedicated Assistant Commissioner Sir, Shri G.S.N. Reddy, has done not just for us, but the entire Kendriya Vidyalaya fraternity is one of them. Sir, I extend my sincere thanks to you for accepting our invitation and grace the occasion
as a chief guest and blessing us. With profound gratitude, I also express my heartfelt thanks to the founder principal of this Vidyalaya, Shri K. Kalidas sir, for being with us in this happy moment. Too often, we underestimate the power of a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn life around. Honestly, our principal sir possesses all these traits, and it is his vision and constant inspiration and guidance that motivate us to achieve great heights. Thank you, sir, for your encouragement. We are also grateful to the CPWD staff and the chairman, sir, for extending their help and support on all important occasions and even the day-to-day life. We also acknowledge our gratitude to all the parents for their wholehearted cooperation in encouraging their wards to participate in this program and other programs. I also extend my thanks to the members of the print media for attending our program and giving it a wider publicity. The appropriate lighting, sound, music and the decoration has richly enriched the grandeur of the show, and I thank them sincerely. An event like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling weeks ago. We have a team of dedicated colleagues and office staff who have put in their tireless effort for the grand success of this show. A special thanks to Srimati Mangla Madam, our music teacher, Satyavati Ma'am, our dance teacher, and all the CCA coordinators for their persistent efforts. I am also indebted to all the supporting staff who have contributed their share to the success of this program. Last but not the least, a special heartfelt thanks to all the students who have participated directly and indirectly in making this grand function a grand success. A child on a farm sees a plane fly overhead and dreams of flying, but a pilot on the plane sees the farmhouse and dreams of returning home. That's life. Enjoy yours and wish that as we part our ways, we'll meet again next year with renewed energy. Thank you and Jai Hind.